देखिए कोवेलेंट एंड जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर ग्रेफाइट डायमंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड. First of all, what is graphite and what is diamond? Both are allotrope of carbon, right? Both are allotrope of carbon. Allotrope किसे कहते हैं? Allotrope are different form of same element. आपने डायमंड देखा है, डायमंड. आपने कोयला देखा है, कोल. आपने पेंसिल की लिड देखी है, ग्रेफाइट की बनी होती है. So all have carbon, but their physical appearance is totally different. Such property is called allotrope. Such element is called allotrope. क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? कोई भी ऐसी चीज जिनकी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो, देते वो रिएक्शन कार्बन का हो, लेकिन देखने में वो बिल्कुल अलग अलग हो. क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. So both are allotropic form of carbon. Graphite is allotrope, diamond is allotrope. Now look at the structure of graphite. Graphite, this is hexagonal. Hexagonal means 6 sides. 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is hexagonal site. It has covalent bonding. It has covalent bonding. अब क्या होता है, जैसे आपकी अम्मी चादर तय करके ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर लेयर्स बना के रखते हैं ना, इसी तरह से ग्रेफाइट फॉर्म लेयर्स. ग्रेफाइट फॉर्म्स लेयर between the carbon. This dot means carbon. These are carbon. So each carbon is bonded by the covalent, and between the layer we have attraction. This attraction is called van der Waals force of attraction. मैंने आपसे कहा कि ग्रेफाइट के अंदर लेयर्स होती हैं, लेयर्स. जैसे अम्मी कपड़े तय करके रखती है ना, एक के ऊपर एक के ऊपर एक. रोटी पकाते वक्त एक के ऊपर एक के ऊपर एक. इसी तरह से ग्रेफाइट लेयर्स फॉर्म में होता है. ग्रेफाइट हैज two type of bonding. Number 1 covalent bonding, number 2 van der Waals. बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए, when you heat the graphite, it direct convert into gas. This property is called sublimation. आपको क्या ये बात पता है sublimation क्या होती है? Yes, sir. When solid directly convert into gas, this is called sublimation. आपको मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. अच्छा, अब देखिए ये जायंट स्ट्रक्चर क्यों है? क्योंकि देखिए ये कार्बन रुकते नहीं है, ये रुकते नहीं. कार्बन, अनदर 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 कार्बन, कार्बन 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 कार्बन. So they have a lot of carbon bonded with each other. That's why they form giant structure. All are carbon, 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 carbon. इतने कार्बन आप गिन नहीं सकते. That's why they are called giant structure. A lot of covalent bonding between these carbon. बात समझ आ रही है? Yes, sir.
यही चीजें बताई हुई है। कार्बन कार्बन के दरमियान कोवेलेंट बॉन्डिंग है, लेयर के दरमियान वीक वंडर वॉल है। तो देखिए कार्बन कार्बन बॉन्ड्स दिख रहे हैं आपको, ये आपको मेरी बात समझ आ रही है? अब यस सर। मेरा आपसे सवाल है, बताइए बताइए कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? कार्बन का ग्रुप कौन सा है बताएं? सर कार्बन 4 बनाता है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना बेटे। आप बताइए इसमें कितने बॉन्ड बन रहे हैं? सर 3। 3। तो एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन बाकी है ना? यस, सो इट विल बी ये delocalized। it is delocalized. This is carbon, this is carbon electron, this is carbon electron, this is carbon electron, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन, कार्बन इलेक्ट्रॉन। ये बॉन्ड नहीं बनाते, ये आवारा है, डीलोकलाइज्ड। ये घूमते रहते, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर। सो ग्रेफाइट हैज delocalized electron. That's why graphite is a good conductor. हर ग्रेफाइट के कार्बन में एक इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज। डीलोकलाइज का मतलब है आवारा, बॉन्ड नहीं बना रहा ना, बॉन्ड होगा तो रुकेगा ना, ये बॉन्ड ही नहीं बनाता, तो लिहाजा ये डीलोकलाइज्ड है। इसीलिए ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर। नेक्स्ट, ग्रेफाइट इज स्लिपरी। क्यों स्लिपरी है भाई? आप देख सकते हैं ग्रेफाइट हैज डिफरेंट लेयर्स का, लेयर नंबर 1, दिस इज लेयर नंबर 2, दिस इज लेयर नंबर 3। जब आपने इस एक लेयर को ड्रैग किया, ये देखें, ये ड्रैग, इसको खींचा, तो देखिए ये यहां चले गई, बाकी सारी लेयर वहीं की वहीं। तो व्हेन यू अप्लाई स्मॉल फोर्स, लेयर मूव फॉरवर्ड, दैट्स व्हाई ग्रेफाइट इज स्लिपरी। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। चलिए सनम, अब एक एक करके क्वेश्चन में पूछता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपसे एक सबसे पूछूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, अमीर, व्हाट आर एलोट्रोप्स? So there are different forms of the same element. Yes, they have Like they they have same chemical property, but different physical property. Their physical appearance is totally different, but their chemical property is same. Yes, Aiza Suleiman, can you repeat the definition of allotrope? बरीरा, बताइए एलोट्रोप क्या है? शाबाश। Allotropes are those which have same chemical properties but have different appearance. Different physical property, very good, but they are atom of same element. बात समझ आ रही है? डिफरेंट फॉर्म ऑफ एलिमेंट। बरीरा मेरे साथ बोले, एलोट्रोप इज डिफरेंट फॉर्म ऑफ एलिमेंट, एन एलिमेंट। बोले, Allotropes are different form of element एलिमेंट हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज having same chemical properties. बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। यह साथ Sir, could you also say like electrons are subparticles of an atom which carry a negative charge, and they are outside the nucleus, यस and they like orbit? यू आर आस्किंग अबाउट द डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। No, about electrons. इलेक्ट्रॉन्स, एलोट्रोप्स, एलोट्रोप्स साथ एलोट्रोप्स। Oh, you say allotropes. Okay, okay. वी आर आस्किंग अबाउट द एलोट्रोप, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्तफा खान, can you explain what is allotrope? Mustafa Khan, can you try? What are allotrope?
Mazen Burhan. Mazin Burhan. Same element, but different form. Different form of element, yes. Then Mazin, they are different form of an element. They have same physical, no, they have same chemical property, but different physical property. Mazin, can you repeat the definition? They have same physical. They have different physical property and same chemical property. Yes, they are different. Okay. Sanam. Sanam, Yes, second sir. question. Can you give the example of some allotrope? Diamond and graphite. Diamond and graphite. Very good. Diamond and graphite. Very good. So, can anyone explain why graphite is a good conductor? कोई आप में से बता सकता है why graphite is a good conductor? Sir, graphite is a good conductor because it has one free delocalized electron. So that's why Mhm. it has electrons to carry the charge. So Yes. that's why it can conduct. It's a good conductor of electricity. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. देखो मेरे बच्चों, बरीरा बरीरा, मैं आपसे पूछूंगा, सुने. दे हैव delocalized electron. So these electron move. Flow of electron is called electricity. That's why graphite is a good conductor. बरीरा बताइए why graphite is a good conductor? Yes, बरीरा, why? सर मैंने सुना नहीं. मैं आपसे कह रहा हूं, ठीक है, सुने. मैंने कहा graphite is a good conductor. Why graphite is a good conductor? Because each carbon has one delocalized electron. So these delocalized electron move. That's why graphite is a good conductor. बोले बरीरा, बोले why graphite? Because it contains these each delocalized electron. Each carbon has one delocalized electron, and these delocalized electron can move. That's why graphite is a good conductor. दोबारा रिपीट करें. बरीरा, Sanam, can you repeat? Sanam, can you repeat? Sir, I wasn't able to hear your voice. Like, can you repeat? Why? Yes, why graphite is a good conductor? Yes, Sanam. Amir, why graphite is a good conductor? Sir, each atom in graphite has one delocalized electron, so this electron can carry the charge. Very good, very good. So next part, move to the next part. Why graphite is slippery? Umar, why graphite is slippery? Sir, graphite is slippery due to the weak intermolecular forces between the layers. So like you can easily slide, they can easily slide over each other when little force is applied. Very good. Very good.
Now next is melting point. Melting point of graphite is very high because of the giant molecular structure. Solubility, graphite is insoluble in water. Next is diamond. Diamond is the hardest known material. Graphite is the hardest known material. It is giant molecular. Now you can see that diamond has 4 bonds. So there is no delocalized electron. बोलो ना भाई, क्या delocalized electron होगा? No. That's why diamond is not a good conductor. That's why diamond is not a good conductor. Diamond is not a conductor. Diamond is not a good conductor. Diamond is not a good conductor. Melting point is very high because it is giant structure. Now, use of diamond and graphite. आपको मालूम है कि डायमंड बहुत हार्डेस्ट है, तो लिहाजा जब ड्रिल की जाती है पहाड़ों में, उसके लिए डायमंड यूज किया जाता है ड्रिलिंग के तौर पे. डायमंड की ज्वेलरी बनाई जाती है. ग्रेफाइट को पेंसिल में यूज किया जाता है एज ए लिट. ग्रेफाइट को एज ए लुब्रिकेंट यूज किया जाता है. ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड बनते हैं, इलेक्ट्रोड. Sir, यस सर. sir, but graphite, we make electrode of from graphite, but it Yes. is because it's inert. But what about the electrons, sir? Don't they react? Yeah, only react. It is inert, right? It does not react with any other metal. It has the tendency to accept and give electrons, right? That's why it is used as electrode. Are you getting my point? Okay, sir. So basically, there's a difference between reactivity and conducting. Yeah? Yes, conductivity is totally different. Conductivity means movement. Conductivity means movement of electrons. Okay, so, sir. So like graphite is like the Yes. only non-metal. Graphite is the only non-metal that can conduct like electricity. We can say that. We have another metal which is liquid, mercury, right? So it is non-metal which conduct electricity. Yes, carbon is metal or metalloid. Yes. Sir, carbon is non-metal. What is metal and what is metalloid? Metalloid means some property of metal, some property of non-metals. So Carbon is gra a so metalloid. graphite is so sir, so It is graphite is also non-metal. like a metalloid. Carbon is non-metal, but we can convert into the species which can conduct electricity, right? So that's why it is called metalloid. It is beyond your syllabus, right? So no need to discuss furthermore. Next is silicon 4 oxide. Next is silicon 4 oxide. Next is silicon 4 oxide. बच्चों याद रख लेना, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है Si2O4.
इसका इंपेरिकल फॉर्मूला है SiO2, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज Si2O4, empirical formula is SiO2. सिलिकॉन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है कि वन सिलिकॉन इज अटैच विथ 4 ऑक्सीजन, एंड वन ऑक्सीजन is attached with 2 सिलिकॉन। एक सिलिकॉन से 4 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन से 2 सिलिकॉन। बात समझ आ रही है? Yes, sir. अब हर एक से 4 ऑक्सीजन, हर ऑक्सीजन से सिलिकॉन, हर सिलिकॉन से 4 ऑक्सीजन, हर एक ऑक्सीजन से 2 सिलिकॉन। सो ये बॉन्डिंग चलती रह जाएगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। दैट्स व्हाई SiO2 हैज जायंट स्ट्रक्चर। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? Hari, sir. चलिए अगला है, मैंने आपको ये बता दिया कि ग्रेफाइट को एज अ लुब्रिकेंट और इलेक्ट्रोड भी यूज करते हैं। ये इलेक्ट्रोड बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया था, इलेक्ट्रोड है। उसके बाद मैंने कहा डायमंड इज यूज एज कटिंग टूल्स। उसके बाद मैंने डिफरेंसेस आपको लिखवा दिए थे, डायमंड और ग्रेफाइट के दरमियान डिफरेंसेस जो पढ़ाए ऊपर। नाउ अभी मैं इसके 5 पेपर कराऊंगा और जहन खुलेगा आपको। नाउ मेटालिक बॉन्डिंग, नाउ मेटालिक बॉन्डिंग, दिस इज कॉल्ड मेटालिक लेटिस। ऐसा समझते हैं कि ये सोडियम है, सोडियम इज अ मेटल, सोडियम हैज 1 delocalized इलेक्ट्रॉन। देखिए सोडियम, ये रहा सोडियम, सोडियम 11, first shell 2 electron, 8 electron, 1 electron. So this electron is delocalized. ओ भाई बात समझ आ रही है अमीर? Yes, sir. So it has 1 delocalized electron. Now this electron is attracted by positive ions. This attraction is called metallic bonding. Electrons are attracted by positive ion. So we have C of electron, C of electron. So these C of electrons are attracted by positive nucleus. Such attraction is called metallic bonding. आपको मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ये कहलाती है metallic bonding. Now next is ये मैंने आपको बताया, ये सोडियम है, सोडियम हैज 1 delocalized electron. This is calcium, calcium has 2 delocalized electron. This is aluminium, aluminium has 3 delocalized electron. So aluminium has 3 delocalized electron. तो बताइए किसमें मेटालिक बॉन्डिंग ज्यादा होगी? Aluminium. 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 Aluminium has strong metallic bonding. तो अब इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। Why they are good electrical conductor? Because they have delocalized electron, moving electrons. So they have the tendency to pass the electron. That's why they are good electrical conductor.
Second is they are malleable, they are ductile. Malleability का मतलब होता है कि हम इसको जो दिल चाहे जिस शक्ल में चाहे बना सकते हैं. आपको मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. हम आगे बढ़ते हैं. हम आगे बढ़ते हैं. अब आप देखिए कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट है 1083, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट है 1535. तो क्या आप बता सकते हैं कि आयरन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है कॉपर से? It has more delocalized electrons. No, it has same electron. It has stronger attractive forces. Strong as attractive forces. Now this is correct. This statement is correct. It has strong attraction. So they conduct electricity, right? They conduct electricity. We have discussed. So now this is all about the covalent and metallic bonding. Now I am going to the past paper, right? This is bonding past paper. Now bonding past paper. ये था वो बॉन्डिंग का जो हम ढूंढ रहे थे. चलिए बॉन्डिंग पास पेपर. बॉन्डिंग पास पेपर. चलिए बॉन्डिंग पास पेपर पे जाते हैं जिसके अंदर हमारे पास सारे क्वेश्चन होंगे आईजीसीएससी के और दूसरे. बॉन्डिंग के पास पेपर पे जाते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1, 5070, पेपर 11, समर 2019. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6. Now 2019 summer, question number 6. Question number 6. Question number 7, sorry. Question number 7.
Question number 7. Question number 7. चलिए बताइए, विच डायग्राम शो द आउटर इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट इन कैल्शियम फ्लोराइड? बोले कौन सा आंसर सही होगा? बोले विच डायग्राम शो द आउटर इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट इन कैल्शियम फ्लोराइड? बताइए कैल्शियम के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? Sir, 2. 2 इलेक्ट्रॉन तो दे दिए उसने, अब कितने बचेंगे? 8. The last. 8. तो इन द लास्ट, तो ये भी गलत, ये भी गलत। अब ये 2 सही हो सकते हैं। तो बताइए कौन सा सही होना चाहिए? कैल्शियम पे -2 चार्ज होता है, +2, Okay, +2. तो इट मींस सी इज करेक्ट। It means C is correct. This is calcium electron. This is calcium electron. So calcium give 2 electrons. बोलो बात समझ आ रही है, किसी को नहीं आ रही है बोले? Yes, sir. Now question number 2. How many shared pair of electrons are there in one carbon dioxide molecule? How many electrons? Question number 2. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, प्लीज इसको देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Question number 8. Same. Question number 8. Carbon dioxide. How many shared pair of electrons are there in carbon dioxide? ये रहा कार्बन, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, याद करना पड़ेगा। कार्बन फॉर्म डबल बॉन्ड। बताइए हाउ मेनी शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन वन कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल? 4. 4. This is one shared pair electron, second shared pair electron, third shared pair electron, fourth shared pair electron. So the answer is B. बोले आपको मेरी बात समझ आ भी रही है, नहीं आ रही है? Hari, sir. Yes, sir. ठीक हो गया, हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने सिलिकॉन पढ़ के गए हैं, सिलिकॉन वाला कोई क्वेश्चन निकालते हैं। नाउ 2019 5070 570. Now this is variant 22. Summer 2018. Question number 5. Question number 5. Now 2018. Question number 5.
This is question number 5. Silicon has a giant molecular structure. Yeah, this question. And then this one. Yes. चलिए जी, silicon has a giant molecular structure. Suggest 2 physical properties. Yes. बोले सिलिकॉन की 2 प्रॉपर्टी. Sir, it is a high melting and boiling point. Silicon has a giant है, so that's why it has high melting and boiling point. Very good. Next. And it does not conduct electricity. Poor conductor of electricity. Correct. Very very good. तो भाई सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाता है, याद रख लेना. सिलिकॉन is also giant. Silicon is also giant. Silicon form 4 bonds. So giant है, इसका मतलब ये हुआ it has high melting and boiling point. It has high melting and boiling point. High melting and boiling point. Silicon is insoluble in water. Silicon is insoluble in water. मिट्टी भी नहीं होती है. नंबर 3. पुअर कंडक्टर. 4 बॉन्ड बन गए ना यार, 3 बॉन्ड पे कंडक्टर होता है, 4 बॉन्ड बन गए. पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. Now next point. Next question. Silane has a molecular formula SiH4. Draw a dot and cross diagram to show silane. बताइए सिलेन कौन से ग्रुप में है? बताइए Si सिलिकॉन कौन से ग्रुप में है? 4. 4. So it means it can form 4 bonds. So SiH4 has 4 hydrogen. So this is 1 hydrogen. This is second hydrogen. This is third hydrogen. This is fourth hydrogen. आपने कहा सिलिकॉन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फोर्थ ग्रुप. आपने यही कहा है ना बेटा? आपने क्या कहा? बोले सिलिकॉन कौन से ग्रुप में? 4. 4 मींस 4 इलेक्ट्रॉन. Group 4. So hydrogen. This is hydrogen. Hydrogen has 1 electron. This is dot and cross formula of SiH4. Cross means electron of hydrogen, while dot means electron of silicon. Electron of silicon. Cross means electron of hydrogen. बोले आपको मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही है भाई? बोले Yes, sir. अच्छा. अब ये वाला है लास्ट क्वेश्चन इसका.
Using idea about structure and bonding, suggest why silane has low boiling point. बोले क्या लिखेंगे? Why silane has low boiling point for 2 marks. Silane is giant molecular or simple molecular? So it's simple molecular. Why is it is simple molecular? Because it has low boiling point. बात समझ आ रही है? लो बॉइलिंग का पॉइंट का मतलब ये हुआ सिंपल मॉलिक्यूलर, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता हम लिखते इट हैज जायंट स्ट्रक्चर. बोले ना यार, समझ आ रही है? Yes, sir. So silane is simple molecular structure. बोलिए सिलिकॉन में आयनिक बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट होती है या मेटालिक? Covalent. कोवेलेंट. Covalent. So next point is it has covalent bonding. It has covalent bonding. बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. चले आगे लिखते हैं. बताइए इसके दरमियान ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, कम होगी? It will be less. लेस होगी, वीक होगी, वीक. क्योंकि लो बॉइलिंग पॉइंट है ना. वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. बताइए इजी टू ब्रेक होगा इन फोर्सेस को या मुश्किल होगा? It will be Easy. easy, sir. Easy. That's why weak forces easily overcome to break. That's why low boiling point. That's why low boiling point. और बोलो भैया बात समझ आई है कि नहीं आई है? Yes, sir. ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. चलिए अगला क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5070 variant 21 winter 2015 question number 7. Now 2015 winter 21. Question number 7. Seven, yes.
Now, structure of graphite and boron nitride are shown. This is question number 1. Protons, high melting and boiling point. This is electrolysis. Give another property of graphite. Yes, graphite. So this is next question. So 3 question, 3 parts. This is question. Yeah, this is the question. बताइए, explain term of structure bonding. Why boron nitride feels slippery to the touch? अभी पढ़ के गए हम why. बोलिए why it has slippery touch. The layers slide over one another. Yes. So first of all, Sir, tell me the forces between the layers. sir. So basically, Yes. it has like weak Mhm. weak intermolecular forces between each molecule. So that's why when you apply a little amount of force, the layers slide over each other, and so Very that's good. why it's slippery. Exactly. So we have 2 lines, right? So mind this point, you have only 2 lines. So it has layer, it has layers, and each layer is attracted by van der Waal. We have discussed that we have van der Waal. This is van der Waal. This layer, each layer is attracted by weak van der Waal. So weak forces, so they can slide over each other. This is for one point. They can layers can be slide over. Layers can be slide over each other. Now next question. समझ आया? Yes, sir. Alhamdulillah. Now next question. Now, can you tell me number of proton in boron? बोले इसमें कितने प्रोटॉन हैं? Sir, 5, and then neutrons are 6. 5 proton. 11 minus 5 is 6. 6 न्यूट्रॉन. 11 में से 5 को निकाला 6 न्यूट्रॉन. बताइए explain why graphite has high melting point. अभी करा के गया हूँ for 2 Sir, marks. it has a high melting point, because it has covalent bonding throughout the structure, and which requires high energy to break the bonds.
एक पॉइंट भूल गए, giant structure. Yes, sir, I said that. Like, basically, I said like it has covalent bonding throughout the structure. Yes, correct answer. But it's better to write it has giant structure. Within the bracket, you can write giant structure, right? So it has giant structure. Giant structure means throughout the structure, it has covalent bonding. Throughout the structure, it has covalent bonding. So bonds are strong. A lot of energy is required to break the bond. So bonds, बहुत सारे bond हो गए ना. So bonds are strong. A lot of energy is required to break the bond. बोलो बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes, sir. ये भी बात समझ में आ गई. एक और ग्रेफाइट का क्वेश्चन बीच में छोड़ा हुआ है हमने. बोले भाई, why graphite conduct electricity? बोले Sir, because it has delocalized electrons moving throughout the structure. because it has delocalized electron. It has delocalized electron, which moves easily. चलिए, give another property that make it useful as an electrode in this electrolysis. Yes, It is inert. it is inert. Very good. Very, very good. It is inert. It is inert. It is inert. Now next question. ओ बेटा समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बोलो. Yes, sir. 5070 slash variant 22 slash May June slash 2011. Question number 5. Question number 5. Two 2011.
Summer. Variant 22. Question number 5. This is about the diamond. Yes. 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 This question. This is diamond. This is called blue diamond. Now explain in terms of structure and bonding why blue diamonds have high melting in point. Yes. और भाई कोई और भी तो बता दे, सनम आप बता दें, परीरा आप बताएं, ये बाकी सब चुप होने के लिए बैठे हैं. आयजा सुलेमान, अमीर, मजीन, मुस्तफा खान, बोले why diamonds have a high melting point? ओ भाई कोई बताएगा इसका आंसर? Sir, हाँ Sir, आप भी बोले because यार. we have a giant covalent structure. Because it has giant covalent structure. Okay. Sir, Throughout the, sir, हाँ बोले. sir, it is because sir, how many marks is this? Marks? Marks, Marks, 2 marks. 2 marks. Sir, could you say like because diamond doesn't have weak van der Waals? Diamond, there is no weak van der Waals. It has giant covalent bond. It has many covalent bonds. So throughout the structure, it has covalent bond. Now you can write within the bracket giant structure. Giant structure. वास्तव giant structure लिखने पे नंबर नहीं मिलते, इसलिए मैंने giant structure ब्रैकेट में लिखवाया है. Throughout the structure, it has covalent bond. A lot of energy is required to break these bonds. Second point, a lot of energy is required to break the covalent bond. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. बेटा पार्टिसिपेट करोगे ना तो सीखोगे, वरना टाइम जाया कर रहे हो अपना. बोलोगे पार्टिसिपेट करोगे तो आएगा. चलें बताइए आप क्या लिखेंगे? Sir, हाँ it बोले. is because diamond has a tetrahedral structure, so all 4 of its electrons are used, so it has no delocalized electron to carry the charge.
ठीक है, और कोई बताएगा? वेरी गुड। हाँ बेटा बोले। So the carbon atoms in diamond form 4 covalent bonds, so there are no more electrons to carry the charge. Exactly. There is no free electron. So it has no free electron. It has no free electrons. They are not बेटे बात समझ आ रही है? Yes, sir. It has no free electron, no delocalized electron. ऐसा भी कह सकते हैं, it has no delocalized electron. Next, suggest why blue diamond can conduct electricity. ये क्या बात हुई? Explain in terms of structure and bonding why normal diamond do not conduct electricity. Suggest why blue diamond can conduct. बताएं आप में से कोई है? It has free चेक करें, ऊपर electron. देखें. क्या आपको इसके अंदर बोरोन दिख रहा है? बोरोन, Yes, sir. Yes, sir. बोरोन तो दिख रहा है. Sir, बताएं, हाँ बोले. so it means like the answer would be like it also has boron atoms which conduct electricity. नहीं, ऐसा नहीं लिखेंगे. बताइए बोरोन की कौन से ग्रुप में बोरोन? Group 3. बोरोन इज इन ग्रुप 3. तो भाई तो इसमें तो ग्रुप 3 में तो 3 बॉन्ड बना रहा ही है. Sir, the carbon has one electron left. Where? Sir, because carbon is in group 4. Yes, so it forms 4 bonds. Sir, could it be Yes, like बोले. it has free electrons? Where So where you have? Where you have? Where you have free electrons? बताए ना. sir, you don't have free electrons? Sir, in the boron. Yes, due to boron. Why boron? Because boron is metal. Metal has delocalized electron. Because blue diamond, Sir, isn't boron non-metal? boron is metal. Oh, Because boron because blue diamond has boron and boron is metal. Metal has delocalized electron. बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? yes, sir. Sir, a blue diamond का formula क्या होता है? Blue diamond is this. So do you have to memorize the formula of blue diamond? No need to memorize the formula of blue diamond. Now look at here, we have boron, and you know that boron is metal, right? And metal has delocalized electron. That's why
So you can also write Sir, I forgot that boron was a metal. boron is metal, I think. Yeah, it is. Or you can say that it's metalloid, near to the metal. So blue diamond has delocalized electron. Blue diamond has, Sir, so it means it would have been correct if we wrote it is because blue diamond has delocalized electrons. no, it is correct. Blue diamond has delocalized electron due So if to you only boron wrote that, metal. we would have gotten 1 mark. Better write the full statement. Blue diamond has delocalized electron due to boron metal. Now it is correct. So better to write red one. Blue diamond has delocalized electron due to boron metal. Next, graphite is another pure form of carbon. Suggest 2 reasons why graphite usually used as an electrode in electrolysis. Yes, So it's because one is it is inert, and the other is it conducts electricity. it has free electron or no free electron. So it conducts electricity. It has free electrons. It has free electron, so conduct electricity. Very good. And the other is inert. Conduct electricity. Yes. And second is Inert. it has high. It is inert. It has high melting point. It has high melting point. So during electrolysis, it remain metal. Point number 3, it is inert. Insoluble in water. So these are the property why diamond is used in electrolysis. Sir, could you repeat? Which is these 4 points you have to memorize. These 4 points, right? Yeah, okay, sir. Now next is five zero seven zero. Variant 12. Winter 2018. 2018. Question number 27. Two 2018 winter. खुल ही नहीं रही। वन में भी हो गई है फिर ये भी नहीं खुल रहा। ये भी नहीं खुल रहा भाई। 2017 निकालते हैं। 2017 समर 12. Yes. Question number 2.
बोले कौन सा आंसर सही है भाई? Sir, no, yes. हम्म, बोले कौन सा आंसर सही है बेटा? Sir, C. C answer is correct. Why C answer is correct? Sir, because in X it shows like a tetrahedral shape, which is diamonds, and for Y it shows like layers, which is for graphite. And you know that diamond doesn't conduct electricity, whereas graphite does. So the answer should be like wrong and in tick. Now look at the structure. It has 4 bonds. 1, 2, 3, 4. 4 bonds. No delocalized. No delocalized electron. So non-conductor. It has 3 bonds. One is delocalized. One is delocalized. कल इंशाल्लाह हम जो है ना वो करेंगे इंशाल्लाह. कल इंशाल्लाह हम नया चैप्टर करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस. चलें नेक्स्ट क्वेश्चन and last question. 5070 variant 11 October November 2016 question number 10. winter. Yes, this is the last question for today. चलिए, which diagram represent the structure of solid metal? बोलें. Sir, C. C. No, wait, sir, wait, 1 second. Sir, D. D. Yeah, sir, it's D. D. So the answer is wrong because there D. is B. B is correct. B is correct. अबे भाई चुपचाप बैठे रहते हो, पूछा तो करो कि ये नहीं समझ आ रहा क्यों A है क्यों B है. अबे भाई A इसलिए नहीं हो सकता, ये क्या पार्टी चल रही है, प्लस माइनस इको पार्टी चल रही है, ऐसा थोड़ी होता है. ये देखें सारे माइनस एक साथ हो गए, ये भी पार्टी चला रहे हैं. ये क्या है भाई सारे, हाँ ऐसे हो सकता है बराबरी की, प्लस माइनस माइनस के नीचे प्लस, प्लस के नीचे माइनस, ये डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. Sir, ये क्या सारे के सारे नेगेटिव इधर आ गए. बोले sir, shouldn't it be like D? Because it says like the definition of metallic bonding is like cations like surrounded by sea of delocalized electrons. So like all the cations are like surrounded here. So shouldn't it be A D? D. Now listen, solid metal
there is no negative ion, right? That's why A is wrong. No negative ion. No negative ion. So A is wrong. C may be correct, but here you have regular arrangement of electron. This is wrong. In D, you have a series of electron. This is wrong. This is correct. For one positive, you have one electron. For one positive, you have one electron. Okay, sir. ओके बेटा, इंशाल्लाह कल नई क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो हमारा है, ठीक है भाई। खुदा के लिए बोला करो, माइक लगाओ, कुछ बोलो, ऐसे तो काम नहीं चलेगा भाई। पढ़ाई थोड़ी होगी ऐसे, 5 महीने रह गए एग्जाम में, तो उसका ख्याल करो, ठीक है। चलो, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz. Sir, Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Thank you, sir. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज बेटा।